Good morning, Assalamu alaikum, Khawateen Hazrat. My name is Shahab Karni from Washington, D.C., Television I-95 USA Studios. So I will have this very brief segment with our dear friend Todd Shea and his new wife Fozia Tahira joining us from Islamabad, Pakistan. So I will have a combination of English and Urdu. Why? Because Todd and Fozia has just created a bridge between US, meaning America, and Pakistan. Congratulations, Todd and Fozia, both of you. Thank you. Thank you. And Thank you, sir. our friends all over the world, especially in America, they know Todd for his work, his humanitarian services for Pakistan for 15 plus years. Very dedicated, committed gentleman. But now, as a team, husband and wife, I'm sure this is going to be double down on the work that you're doing. Fozia, आप कैसी हैं? Can you hear me? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यस, मैं अच्छा, बिल्कुल आपको क्लियरली सुन रही हूँ। जी थैंक यू। तो फौजिया ये बताइए कि कैसे मुलाकात हुई टॉड से और हाउ यू गॉट मैरिड, जरा सा बताइए हमारे सुनने वालों को। ठीक है। She was minding her own business, and then all of a sudden this Gora came around saying hello. ओके ओके जी फौजिया। जी जी, मैं रेडियो पाकिस्तान में FM 94 धनक चैनल पे काम करती थी उस वक्त। ठीक है, जब ये वहां पर इंटरव्यू के लिए आए तो वेरी गुड। मैंने इनको प्रोफेशनली इनको मैंने स्टूडियो विजिट करवाया और इनसे एज अ गेस्ट जो है फॉर्मली चाय का पूछा और ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ली इनके बारे में। ये सिंगर थे, फिर कैसे चैरिटी वर्क पे आए, ये वो इन्होंने अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया मुझे। तो मतलब मैंने इनको प्रोफेशनली ही डील किया था, कोई नंबर एक्सचेंज नहीं किया, ना इन्होंने मेरे साथ किया ना मैंने इनके साथ किया। इवन मैंने नोटिस भी नहीं किया उस वक्त। तो बस वो ही एक फर्स्ट मेरी एक फॉर्मल मुलाकात थी रेडियो पाकिस्तान में। उसके बाद फिर ये अमेरिका चले गए, मुझे तो नहीं पता था, मैं तो इनके साथ कांटेक्ट में थी भी नहीं। तो इन्होंने फिर मेरे साथ आफ्टर 8 मंथ्स और 9 मंथ्स Yeah, almost मुझसे almost 8 months. मुझसे कांटेक्ट किया। तो फिर मैं सरप्राइज हो गई, मैंने इनसे पूछा कि मैंने तो आपको नंबर ही नहीं दिया था, आपने मेरा नंबर कहाँ से लिया। फिर इन्होंने मुझे बताया कि वो आपके चैनल पे एक आरजे होते हैं, वो अदील नाम है उनका। तो उनको मैंने रेडियो पाकिस्तान से की वेबसाइट से आपकी पिक्चर उठाई थी और उनको सेंड की और मैंने बोला मुझे इस लड़की का नंबर चाहिए, मैं कुछ बुकिंग लेना चाहता हूँ रेडियो पे ना, ये कोई शो करना चाहते हो। इन्होंने उनको बताया कि वो मेरी फोजिया जो है ना हेल्प कर सकती है मुझे बुकिंग देने में। तो उन्होंने इमीडिएटली उनको मेरा नंबर दे दिया, फिर इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। तो जब कांटेक्ट किया तो मैं तो सरप्राइज हो गई कि मैंने तो इनको नंबर ही नहीं दिया था। फिर मैंने इनसे पूछा आपने नंबर कहाँ से लिया, ये वो, फिर उन्होंने मुझे पूरा बताया। तो फिर वहां से इन्होंने मुझे अपने बारे में बताया, इनकी डिवोर्स हो गई थी और ये काफी उस वक्त परेशान थे और दुखी भी थे, गम का इजहार कर रहे थे। तो ऐसे फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी इनके साथ ना काफी एक मेंटली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो फिर इन्होंने प्रपोज किया, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा कि मैं अपने, जब तक मेरे माँ बाप मतलब मेरे पेरेंट्स एग्री नहीं करते ना उस वक्त तक मैं हाँ नहीं कर सकती। तो मैंने कहा जब आप पाकिस्तान आएंगे मैं सबसे पहले आपको अपने पेरेंट्स से मिलवाऊंगी, अगर उन्होंने यस किया तो मैं शादी करूंगी, नहीं तो नहीं कर सकती। तो बस फिर ये पाकिस्तान आए, सबसे पहले मैंने इनको अपनी सिस्टर से मिलवाया। तो फिर मेरी सिस्टर को ये कुछ समझ में आ गई, उन्होंने बोला कि फोजिया ये तुम इनको जानती हो, मैं तो नहीं जानती, मुझे तो पसंद आए हैं, तो अब आगे तुम खुद देख लो। फिर नेक्स्ट टाइम 1 हफ्ते के बाद फिर मैंने अपने पेरेंट्स से इनको मिलवाया। मेरे पेरेंट्स जो है ना वो काफी एजेड है ना, मतलब 75 और 80 के दरमियान में है। तो वो भी काफी परेशान थी मेरी शादी के लिए, तो वो करना चाह रहे थे कि जल्दी शादी हो जाए, बेटी है, फर्ज अदा हो जाएगा। तो फिर मैंने उनकी ना काफी खिदमत की है, बहुत ज्यादा उनकी खिदमत की है मैंने। मेरे अब्बू कैंसर पेशेंट थे, तो 2 साल मैं हॉस्पिटल में रही हूँ उनके साथ। तो फिर क्या हुआ, फिर मैं उनको उम्रे पे भी लेकर गई थी, अम्मी अब्बू को दोनों को। तो वो इतनी, मतलब मैं उनकी खिदमत गुजार बेटी हूँ, तो मैंने उनके सामने ये प्रपोजल रखा तो उन्होंने मतलब बिल्कुल इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि फोजिया तुम खुश हो तो हमें कोई एतराज नहीं है। तो Lord, फिर you are so मैंने lucky because
अब मैं टॉड से भी पूछता हूँ, because she is very honest and she is very straightforward. Just take this as a compliment. I figured that Oh, out. She is that's very what I loved straightforward. about her. I I was interested in her, um, and I contacted her thinking that maybe I have 5% chance, but why not try? And 5% chance. But I actually wanted to see what she was inside as well as outside. So once we got to know each other and started talking, both of us we we connected on that very spiritual and personal level from the heart. And it's her maturity and the fact that she was, doing such a important work at Radio Pakistan, and she's young but very smart, very intelligent and independent, and self-made, and was doing a lot to take care of her parents and especially her father when he was sick. So she took them for Hajj last year. Um, and paid for her mother and father to go for Hajj and went with them. So she's a very good daughter, and she's shaping up to be a wonderful wife and Well, partner. congratulations to both of you. I'm sure there is a chemistry there. There's an understanding, and I mean, one thing, Well, she's very, she was she's praying very to Allah for straightforward. I like that. yes, So she's not she was making praying any to stories Allah. like that. She was praying to Allah for to find a good husband, and I was praying to Allah to find a good wife, and somehow He answered our prayers. Well, Inshallah. Allah answered your prayers. I don't know about her. So all right. All right. अच्छा फौजिया ये बताएं कि टॉड जो है वो बहुत अच्छे कामों में 15 साल से ज्यादा पाकिस्तान में इन्वॉल्व हैं। तो आप क्या समझती हैं कि क्या आप भी पैशन फील करती हैं उन कामों के लिए और इनकी हेल्प करेंगी आइंदा आने वाले सालों में? अभी तो इस बारे में मैंने नहीं सोचा, लेकिन अगर इनको मेरी हेल्प की जरूरत पड़ी तो मैं जरूर करूंगी, क्योंकि अभी तो क्योंकि मैं अपनी बहुत जॉब कर रही हूँ ना। मेरी मेरी मतलब परमानेंट जॉब है गवर्नमेंट की। तो ये इन्होंने भी मुझे नहीं कहा कि अपनी जॉब छोड़ के मेरे साथ काम करो। तो जब ये मुझे कहेंगे तो मैं डेफिनेटली करूंगी। लेकिन लेकिन जो काम ये कर रहे हैं उससे आपको इंटरेस्ट है कि भाई हाँ अच्छा काम है होना चाहिए पाकिस्तान में जरूरत है? जी बिल्कुल। बहुत गुड। बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत लोगों की हेल्प करते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है। इसीलिए तो मैंने मैंने इनको पसंद किया था कि जो इंसान दूसरों की केयर करता है वो अपनी फैमिली की, अपनी वाइफ की क्यों केयर नहीं करेगा। Good. So, Todd, what are your future plans? Is she going to be back with you also, or you're just coming to America, to DC for a while, and then you're going back to Pakistan? What are your plans? Well, this year I'll go back in the month of at the very end of October, and I'll stay through November, and then I'll come back to Pakistan. I'm planning on living in Pakistan and just visiting the U.S. for fundraising a couple times a year, maybe for a month at a time or something. And we'll get, inshallah, we'll get Fozia a visitor visa so she can visit with me or something. But we neither of us plan to live in U.S. At this point, and we're just hoping that we can have her come visit, at least visit with me, to meet our friends and maybe have a walima in America and Yes. that kind of thing. But as far as Yeah. our lives, we're here in Pakistan, inshallah. Now, talking about Pakistan, what are the priority sector that you're working right now? Sure. For CDRS, we have 300 plus water projects. Clean water and the environment is very important in Pakistan, one of the high priorities. So we work on we have 22 youth chapters all over the country from Chitral to Karachi. And they've done a lot of flood relief. They've done COVID-19 food emergency pack distribution. So we have these youth teams that are ready when some disaster or calamity hits. They can start moving literally that day that it starts and keep going. So the youth chapters, they do everything from help us feed the poor during Ramadan, rescuing kutas and billies, doing our water projects with us, helping us in, when they find a patient or somebody in their village who needs a surgery or needs some medicines or is in a bad shape, or maybe a lady who lost her husband.
so we can help them. And the youth chapters, they help us establish a good team all over Pakistan that can move immediately and can do all kinds of projects, whether emergency or non-emergency. So a big part of the youth groups is doing the water projects and the environmental projects. We also have one home for widows and orphans here in G13 Islamabad, and we want to expand that project because there's a lot of need in Pakistan. There's a lot of orphans, and there's also a lot of widows who have children are in a bad condition because they've lost the breadwinner of the family and they're going through a difficult time. So this is something that's a need. We also help disabled children. We have a special patients project for them and for people who needs medicines, physiotherapy, and some kind of expensive surgery. Plus, we have our 2 medical facilities. We have the Child Health Clinic in Karia, and we have the Mother-Child Health Center in Swat. So between all of these projects, and including women's empowerment, which we have a sewing center, and we help ladies establish skills training for them and help them get jobs. So there's a lot of fields that CDRS is able to work in because we have a good base of volunteers in the youth, and we have a large experience over the last 15 years in Pakistan doing logistics work in all kinds of disasters and calamities, floods, earthquakes, IDPs, crisis and conflicts, and landslides and heat emergencies and family emergencies. So from large emergencies to small emergencies, we are able to help in times of need. And we have a very good dedicated team. We have about 35 employees now, most of them at the health centers, but we have a logistics team and a mobile team that is out in Sindh right now. And so they have seen all kinds of logistical nightmares that we've dealt with in the last 15 years and all kinds of disasters. So they've now become very experienced in logistics. A lot of my team has been with me since the Zalzala of 2005. Thank you. फौजिया, मुझे आपसे ये सवाल पूछना है कि जो टॉड ने कहा कि वुमेन शेल्टर खवातीन के लिए नंबर 1 और वुमेन एम्पावरमेंट, आप क्या समझती हैं पाकिस्तान में और खासकर जहां पर आप हैं, ये जरूरत है, बहुत बड़ी नीड है? जी फौजिया। बिल्कुल, यहाँ पर ये है कि जब देखिए खास तौर पे तो उस स्टेज पे ना जब औरत बेवा हो जाती है, तो उसको यहाँ पर पाकिस्तान में ये हालात हैं कि उसको उनके सगे भाई तक उनको प्रोटेक्ट नहीं करते। तो ये नीड बढ़ रही है, ये जरूरत बढ़ रही है, ये डिमांड है, इसका ये मतलब जरूरत बढ़ रही है। जी बिल्कुल, ये जरूरत बहुत बढ़ रही है। और दूसरा ये है कि यहाँ पर जो मैंने पाकिस्तान में देखा है ना, लड़कियों के लिए रिश्ते नहीं मिलते, और वो लड़कियां जो है ना वो अच्छे रिश्तों की तलाश में ना बस बैठी रहती हैं। कुछ उनके माँ बाप जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेते उनकी शादियां करने में, और फिर जब पेरेंट्स इस दुनिया से चले जाते हैं तो पीछे उनको देखने वाला, उनको सहारा देने वाला कोई नहीं होता। तो इस पे जो है ना, यहाँ पर जो ज्यादा तादाद में औरतें हैं वो ये हैं। एक तो अनमैरिड जो शादियां नहीं कर सकती हैं, और दूसरा जो बेवा औरतें हैं। ठीक, point taken. Todd, Fozia, thank you very much on a very short notice. I'm so grateful that both of you were able to join. So with these prayers that Todd and Fozia stay blessed, stay happy, keep doing the good work, that Todd has been doing, and now we have a good vibe. I'm sure Fozia is going to be helping you emotionally, spiritually, and whatever you're doing. Fozia, आपने कुछ कहना है? Already been a wonder for my life, and she's definitely, literally the answer to my prayers. So I'm very happy with her, and inshallah we'll go into the future and do as much good work as we can. Absolutely. And we appreciate you having us. जी, आपने कुछ कहना है तो आखिर में ऐड कर दीजिए। नहीं, बहुत अच्छे हैं ये, बहुत, मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, इनकी इज्जत भी करती हूँ जो एक शोहर को देनी चाहिए। चले, बहुत अच्छा है। Ladies and gentlemen, you see what a beautiful bridge between America and Pakistan Todd Shea and Fozia has formed. A very good model, not only love
and inspiration, but they're doing hands-on work. Especially Todd has been involved with the good work, good model. Todd, as a Pakistani American, thank you very much, and God bless you. We'll stay in touch. All right. Thank you. It's an honor, sir, and we'd love to work with you and be on your show more. And I just wish that more Americans could visit Pakistan and see this beautiful country and its beautiful people without the filter of the Western media always telling 2% of the truth 100% of the time. It's going to happen. It is happening. It's going to happen. Inshallah. Well, thank Inshallah. you, Todd, and thank you, Fozia. So nice.